Hey all, Ankit Kishor this side from Stierfleet team and I welcome back to my channel. So I'm making this video after so many days or reason for making this क्योंकि there are actually 2 points. तो first one is सेबी ने जो कल सर्कुलर रिलीज करा है और जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं रिलेटेड टू FnO ट्रेडिंग ओके तो आई थॉट कि मेरे को वो डिकोड करना चाहिए इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल चेंजेस आर गोइंग टू हैपन. दिस इज अबाउट द फर्स्ट थिंग. सेकंड वन इज क्योंकि लास्ट 1.5-2 मंथ से मैंने कुछ भी आपको अपडेट नहीं दिया तो मैं लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस सीट आपको यहाँ पे दिखा दूंगा क्योंकि एक्चुअली फ्रॉम द लास्ट 1.5 months ओनली आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फुल फ्लेज्ड इन ऑल अकाउंट्स. ओके बिफोर दैट आई वाज जस्ट ट्रेडिंग इन वन अकाउंट और ये आपको पता भी होगा क्योंकि बाकी दो अकाउंट्स में आई वाज जस्ट on the sideline okay because a few changes I was continuously making and I didn't want to do R&D all account throughout okay so इसलिए मेरे को लगा पहले मैं एक अकाउंट में करूँगा जब मेरे को लगेगा ठीक है आई एम नाउ अप फॉर इट so I will go full fledged and that's what I did. So from last month I did full fledged trading तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी समराइज वे में करूँगा क्योंकि लास्ट मंथ वाज अ हेल ऑफ राइड ओके और मेरे को लगा कि वो एक्सप्लेन करने से यू माइट गेट सम लर्निंग फ्रॉम देयर. दिस इज अबाउट द सेकंड पॉइंट बट बिफोर गोइंग टू द सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं फोकस करूँगा कि मैं पहले पॉइंट दैट इज सेबी सर्कुलर जो उन्होंने लॉन्च रिलीज करा है रिगार्डिंग FnO ट्रेडिंग वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेबी ने जो पहले एक प्रपोज सर्कुलर रिलीज करा था कुछ 1.5-2 months बैक तो उसमें कुछ 7 पॉइंट्स थे. आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स दे एक्चुअली केम अप विथ एंड दे एक्चुअली आर गोइंग फॉर इट. ओके सो व्हाट ऑल दीज 6 पॉइंट्स आर उनमें से किस पे हमें ज़्यादा इफेक्ट होगा किन पे किसको इफेक्ट होने वाला है. कुछ ऐसे हैं जो शायद इतना इफेक्ट नहीं करेंगे एज सच बट दे ऑल्सो हैव सम रेलेवेंस. ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट दे एक्चुअली आर गोइंग टू डू इज जो कॉन्ट्रैक्ट साइज इंडेक्स में था इंडिसेस के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज जो थे वो ऑलमोस्ट 5-6 लाख के आसपास था. उससे वो इस बार अमेंडमेंट के साथ वो मिनिमम 15 लाख का रहेगा 15 to 20 लाख के आसपास वो रहेगा एंड द डेट दैट दे गेव इज 20th of November 2024. Okay, so from 20th November 2024, the contract size of indices in derivative contracts, okay, they are going to be like 15-20 lakhs. So what does that mean? उसका मतलब क्या है? So see, जैसे निफ्टी की अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज है ऑलमोस्ट 25 की है. ओके निफ्टी इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 26,000. So altogether you can see it is somewhere around 6.5 lakh, right? So now it is going to be like 15 to 20 lakhs. That is like 3 times of it. So अब कॉन्ट्रैक्ट साइज जो अब कॉन्ट्रैक्ट की लॉट होगी वो 25 से कुछ 75 के आसपास होगी. This is about Nifty. The same applies to Bank Nifty, Fin Nifty, and Mid Cap Nifty and all. Okay, this is about द कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज दैट दे आर कमिंग अप विद. बट यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोटिस करने की है जो उन्होंने प्रपोज सर्कुलर किया था रिलीज उस पर वो बोल रहे थे कि दे विल डू इन 2 phases and the maximum they are looking to go till is 30 to 35 lakh. Okay, but for time being they have just come up with one phase decision and that will be around 15 to 20 lakh. So this is about the first point. The second point that is uh, till now and till 20th of November we are going to have daily expiry. Okay, daily expiry we are having, right? In NSE we are having 4 expiries, mid cap, Fin Nifty, Bank Nifty and Nifty. Okay, right from the morning to right from the Monday to Thursday respectively. And in BSE we were having 2 expiry. The first one was BankX on Monday and Sensex on Friday, right? But from here on, means from 20th of November, it is going to be 1 expiry per exchange. Before that we were assuming that it might be just the benchmark index, that is Nifty for NSE and Bank and Sensex for BSE, but it might be Bank Nifty also for Nifty for NSE. And let's see what they come up with. Okay, so this is about the second point. This is a very big change, to be very honest, because before 2022, okay, actually we were having just 2 expiries for NSE, right? That is Nifty and Bank Nifty, and that too both were on Thursday only. Okay, so it was not very relevant for us, very significant for us कि उस वक्त मेरे को हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट? But now after 2022 we were having continuous expiries and we are used to of it now. We have made up our system that way which works well for 0DTs and this is how our system are, at least mine. Okay, so we have to make many changes. Okay, but yeah, see, change is the only constant. Okay, and आप मार्केट में हो या कहीं किसी भी फील्ड में हो तो you have to be dynamic. Okay, you have to keep on bringing change, you have to keep on embracing changes. Okay, so nothing to complain. They might come up with this, they have come up with this decision, they might come up with some other decisions in future. So you have to keep on evolving with their regulations, okay, with their rules and regulations that they are forming. So from here on, I know it is going to affect us maybe for few months, but ultimately, and we are going to embrace that. Ultimately we are going to brace that thing. Okay, so that is about the second point. Third one is जो टेल रिस्क होता था मींस ऑप्शन सेलर्स और एक्सपायरी में मोस्टली बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स हैं जो
they used to sell like very far OTM strikes, and they go all in for that, and they were like collecting some pennies. Okay, so the risk there was huge. And to be very honest, sometimes I also used to do it when I'm not finding very good opportunities, so sometimes just to sit back and chill, sit back on the sideline. So I also used to do sometime. But some guys are here who are actually doing it full fledged, okay, and they are just selling very far OTM. So the risk there is huge, okay. And to cater that, SEBI has came up with a decision that they are going to increase 2% margin on sales, means on option selling of the strikes, okay, and on expiry day, okay. But there is one point to note, on the proposed circular, they were actually saying that they are going to increase 3% margin on 1 DT, that is 1 day to expiry, and 5% margin on expiry days. But they have came up with a relaxation here, and they are just spiking it, hiking it actually, I would say, by 2% on expiry day. So this is about the third point. And now talking about the fifth point, that is upfront option premium margin for buyers from 1st February 2025. What does that mean? Is this really that significance? I would say this is not that significant. Okay, why? Because majority of the brokers, some actually I would say just some of the brokers used to give margin, used to give leverage to option buyers. Okay, so what they used to do, I'm giving an example here. For example, you are a buyer, okay, and you are having 500 rupees. So you are buying for 500 rupees. Some broker used to give you margin of like 1500 to 2000 rupees for option buying. Okay, you only have to do one thing, that is the only restriction there was you have to keep an SL which were on line bid 500 rupees that you have kept on, so that the actual risk for the broker and for you is also the same amount that you are keeping. So this way you are taking very much big leverage position, very much risk, okay, because you are risking everything on that. और the only thing, this is the first thing. Second thing is बस overnight पे आपको वही same margin लेके रखना पड़ता. But here now from here on, no broker is allowed to do that, because there were no rules as such before that. So they were actually giving leverage on that, and option buyers were happy to take it, okay, because majority of the option buyer, I would say, retail participation, I am saying, they are not having that capital. So if they are getting the leverage, they are actually they are very happy to welcome it, okay. So now from here on, if you have to sell 1500 worth of options, sorry, if you have to buy 1500 worth of buying, then you have to give upfront margin of 1500. It doesn't necessarily be in cash form, okay. One question which everyone is asking, ki kya we have to maintain cash balance for that? No, nothing like that. You can even use your pledge margin. It's just that you have to give this much of whatever contract size is there, you have to give that much of upfront margin. This is the fifth point. Now coming to the sixth point, that is intraday position limit जो होगा वो monitor होगा from 1st April 2025. What does that mean? See, अभी भी monitor होता था, but it used to happen at the day end, okay, for every trader, okay. But now from here on, intraday basis पे भी कुछ 3 or 5 screenshots will be taken. So you have the intraday position limit has to be enacted, okay. So this is the meaning of this last point. Still I don't feel like so much of huge significance this is also happening, at least for majority of the traders, okay. So out of 7 proposal circulars that they released almost 2 months back, 6 they actually came up with. I know some relaxation is there in these 6 points, but yeah, these are the changes. I know some of the changes are going to really impact us, okay. The first one is obviously, according to me at least, the first one is the contract size जो बढ़ रहा है, okay, वो impact करेगा. At the same time उससे थोड़ा brokerage हमारा कम होगा, क्योंकि we used to just if 15 lots are there, तो सेम अगर मेरे को कुछ फॉर एग्जांपल 150 क्वांटिटी लेना है, ओके, सो मेरे को 10 लॉट्स का प्लेस करना पड़ता, राइट. अब अगर वो 1 गो में हो रहा है तो ब्रोकरेज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा क्या कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं. बट अगर मैं उसे इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहा हूँ, ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इट कैन बी 1500 क्वांटिटी ऑल्सो, इट कैन बी 15,000 क्वांटिटी ऑल्सो, तो दैट वे वहाँ पे फिर डिफरेंस आएगा. बट व्हेन इट विल बिकम 75 तो ब्रोकरेज थोड़ा कम होगा दैट वे. And the second, which is really going to impact us, is the the daily expiry that is right now. It is going to be over, okay, from 20th November. So वहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, और जिस तरीके से मार्केट डायनेमिक चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वैसे भी हमें चेंजेस तो करना ही है, राइट. सो या वी जस्ट हैव टू embrace it. That's what I would say. Now I think every point I have more or less mentioned here, okay, and I think everything that has to be told, I think I have told you. So now talking about the performance, okay, this is the small account, okay, जिसको जिससे मैं कॉपी करता हूँ अपने बाकी सभी अकाउंट्स को. तो ये कुछ 45 लाख अभी शो कर रहा है, क्योंकि तो मतलब
ये भी काफ़ी गेन किया है। ओके, मैंने प्रॉफिट कुछ बुक भी किया है, और अभी ये फिगर भी थोड़ा 2-3 दिनों में काफ़ी कमा है, बट बिफोर दैट, सो ये कुछ 40 लाख का मैं मार्जिन हमेशा इस पे यूज़ करता हूँ, और मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ठीक है, बाय द वे मैंने कवर्ड कॉल भी लिया था 2 अकाउंट्स में। ओके, मैं क्लाइंट्स अकाउंट में सिर्फ अपनी पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे 3 अकाउंट्स है, यू नो दिस। So this is a small account, and this is one of the big account. This is the second big account. Okay, these three are mine account and they are clients account also. तो उनमें भी सेम कॉपी होता है, सेम ट्रेड कॉपी होता है। ओके, सो वेट, पहले मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। इसमें कवर्ड कॉल लिया था मैंने। ओके, तो कुछ कवर्ड कॉल में 45K का लॉस मैंने बुक किया है, जो मैंने यहाँ से इक्विटी से कवर कर लिया। तो ये अगर आप देख रहे होगे 1.4 लाख का दिख रहा है प्रॉफिट, एंड इक्विटी पे it is 73K, right? So altogether 2.1 lakh rupees, you can take 2 lakh. Okay, that is like 5%, okay, on this capital. And अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे भी सेम मैंने कवर्ड कॉल लिया था, कुछ 40K का लॉस उस पर बुक किया मैंने, और 45K का लॉस मैंने बुक किया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.2 लाख रुपीज़ एंड 7K, मीन्स ऑलमोस्ट 1.9, दैट इज समवेयर अराउंड 3.8%। रीज़न ये कम होने का, क्योंकि पहले वीक पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया, कुछ ग्लिच था मेरे सॉफ्टवेयर पे, इसलिए ये थोड़ा कम दिख रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, फर्स्ट वीक इसका देखना आप, और फर्स्ट वीक आप इसका देखो, सी। ओके, सो एक्चुअली मैंने इस पे ट्रेड नहीं किया। नॉट, आई विल शो यू दिस अकाउंट ऑल्सो, ऑल दो मोरलेस सेम ही होगा, कुछ 4%, 4.5 समथिंग होगा। और इस पे मैंने कवर्ड कॉल नहीं लिया था। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शो करेगा, सॉरी फ्यूचर शो करेगा आपको। And say this is showing 2.07 lakh rupees, that is like 4% on the capital use. The capital is almost 50 lakh, I guess. यप, ये अभी ज़्यादा शो कर रहा है, बट मैं 50 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, कॉपी कर रहा हूँ। बाकी जो भी मार्जिन है वो मतलब स्टिल आइडल पड़ा है। ठीक है, और उसे मैं सारे अकाउंट को एक बार फिर से जो आइडल अमाउंट है उन्हें किसी और अकाउंट में डाल दूँ, या फिर मैं सभी को एक साथ कर दूँ एक ही अकाउंट में, दैट आई माइट डू इन फ्यूचर, बट फॉर टाइमिंग आई हैव नो सच प्लान। Okay, so this is about the performance, and see, I think 4% on such months are not that bad, to be very honest. Okay, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मंथ देखोगे, it was actually very crazy month. Okay, month started 1st September was, I think, here. ठीक है, yep, this one. So यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले तो निफ्टी यहाँ के अगर हाई से आप देखोगे तो ये लो ऑलमोस्ट 2.5% गया, फिर देन इन फ्यू डेज इट एक्चुअली हैज स्पाइक टू 6.5%, देन इन द लास्ट 3 days it went down to almost went down by 2%. So actually very volatile day, very volatile month it was. Okay, and up and down everything it has shown. After showing crazy down move of 2.5-3%, we thought okay it might consolidate here, but after that it gave fantastic breakout in this candle, और उसके बाद फिर ये breakout कन्वर्ट भी हुआ, और काफ़ी सारे 6.5% ऑन अ मेजर इंडेक्स, ऑन अ बेंचमार्क इंडेक्स इज नॉट अ जोक एट ऑल. Okay, so yeah, we tackle it very nicely out. Okay, so the system that now I'm following is actually very fruitful, but obviously we have to make some changes in here also to cope up with the new changes that SEBI has just released. So yeah, this is everything about this month's performance and about the SEBI new rules. So I hope everything that I just shared with you, I hope you just was able to understand that, and I was able to make you understand that. And if everything that I told you, you learned something from them, so please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.